officials and non-officials to inquire into the trouble facing the district. Already इनके एजेंडा में था. This point is there already in the agenda. That they will have to go for giving what is some official documents against it, so that they put an inquiry against this kind of it. And there will be official members some, and there will be some non-officials. And in सब लोगों ने गांधी जी defied the order of several prominent persons who rallied around him and mention may be made up of Dr. Rajendra Prasad. सब लोगों ने, all the people said that don't go, but he has gone. Okay, there. So we have seen which Bijolia and thereafter चंपारण सत्याग्रह. And साथ ही साथ हम लोग को आइडिया मिल गया किसका, अहमदाबाद and then खेड़ा. I said that Kheda movement started with I said the leader was Mohanlal Pandya, but later Gandhi ji come and Gandhi ji के साथ वहाँ पे कौन के साथ में वल्लभ भाई पटेल, and after that वल्लभ भाई पटेल also become fan of Gandhi ji. Okay ना? इनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल. और क्या था? बारदोली के बाद he got the title of Sardar, the woman of the what? Bardoli, that is in the Surat district. They have given the title of what? Sardar. बहुत अच्छा arrangement किया था, the way that he did. I said that Mohanlal Pandya later on by the Gandhi ji, Vallabh Bhai Patel and Mahadev Desai. ये तो नाम आप लोगों को याद भी रहेगा. यस, कौन कौन खड़े हैं? मोहनलाल पांड्या नहीं खड़े हैं. क्या नाम था गांधी जी का? नाम क्या था? मोहनदास. क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी. क्या थे? कौन खड़े थे वहां पे? मोहनलाल पांड्या, मोहनदास, एंड देन और कौन खड़ा था? गांधी जी. और जब गांधी जी खड़े हो गए तो उनको बल, गांधी जी के पास तो ऐसे ही ताकत है, तो उनको पीछे से बल कौन लगा रहा था? महादेव जी. फिर वो खड़े रहे. चलो, सब बड़ी इन द बैक ऑफ इट. उनके अंदर सोल फोर्स था, फिजिकल फोर्स हो या ना हो. जस्ट मेकिंग टू रिमेम्बर कौन पीछे से बल दे रहा था? वल्लभ भाई पटेल, महादेव जी. सो आई सेड दैट गुजरात खेड़ा सत्याग्रह, and Kheda is in a what I said? Yes, it is in Gujarat. Maharashtra. यहाँ पे खेड़ा. अच्छा बनाया? यहाँ नहीं है, इधर है. I said that यहाँ पर नाम सुना है? खेड़ा, आनंद. आनंद का नाम सुना है? Yes. खेड़ा, और खेड़ा के इधर यह आनंद है. ऊपर में खेड़ा, अहमदाबाद, खेड़ा, एंड दिस इज आनंद. Understood? Just at the. मैं तो हिंदुस्तान each and every district I know where they are. And जो स्टूडेंट्स मेरे से मैपिंग की क्लास कर लेता है, जो 2 months का होता है, वो तो आपके लिए you know that GS फाउंडेशन होती है. GS फाउंडेशन, you understand? Really में सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन should happen after those class courses. क्योंकि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी आई एम गुड एट ओनली बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स. सो आई सेड दैट जब भी मैं हिस्ट्री में देखता हूँ, इफ आई से दैट सम इंसिडेंट आई जस्ट पुट इनटू दैट डिस्ट्रिक्ट्स, तो मुझे वो पिक्चर दिखता है. आप खेड़ा देखोगे, मैं खेड़ा देखूंगा इन द मैप, तो हुज पोजिशन विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन आई सी समवेयर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. सो आई सेड दैट Kheda Satyagraha in 19, Gandhi ji learned that the patients of the Kheda district in Gujarat were in extreme distress due to the failure of crops and that their appeals for the remission of the land revenue has not been accepted by the British government. As the crops were less than 1/4 of the normal yield. उससे क्या था? Crops क्या था? On average नहीं, normal से भी बहुत, उसका only 25%. The peasants were entitled under the revenue code to total remission of the land revenue. Gandhi ji organized satyagraha and asked the cultivator not to pay land revenue till their demand of remission was made. So, आप नहीं दो, sit on the movement until it is not accepted. The struggle was withdrawn
when the government issued instruction that revenue should be recovered only from those peasants who could afford to pay. कितना बड़ा काम किया, those who could afford to pay. अब यहाँ पे हम लोग इंटर नहीं करेंगे कौन अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं अफोर्ड कर सकता है. इट इज बहुत बड़ा अपने आप में इश्यू होगा. कैसे मैं आपके जाके पॉकेट में चेक करूंगा कि आप अफोर्डेबल है कि नहीं है. यस और उस समय इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट हु कैन पे एंड हु कैन नॉट पे. सो अफोर्ड टू पे. And Sardar Vallabhbhai Patel was one of the many. I said that young person who became Gandhi's follower during the Kheda Peasant struggle. So Vallabhbhai Patel become the, I said that, fan of Gandhiji after that. Understood? समझ में आ गया Kheda? So Kheda Satyagraha, it is happening in the what is in the Gujarat region nearby Ahmedabad, and when the peasants are not able to what is pay the what is land revenue, and the reason behind, what is the reason behind? Yes, failure of crops, natural calamity, yes or no, drought condition. Therefore, they are not able to pay the tax. Then their produce is only 1/4. So therefore, I said that they called for a movement by whom? Gandhiji. And Gandhiji called for a movement, and then they said that you don't pay tax until it is not permissible, has been provided. And उन्होंने किया. And they accepted. अच्छा गांधी जी के चेहरे में कुछ ऐसा था कि ब्रिटिशर्स डर जाते थे. उनको पता था कि ये बंदा ऐसा ही है, इसको 2 लात मारो फिर भी एक गिर कर फिर बोलेगा अच्छा कब दोगे. सो यू नो दैट कभी कभी आप जानते हो घर में सबसे एक बंदा होता है जिद्दी. आपको कभी देखोगे तो उससे डर लगता है. आपने कभी फील किया होगा. इफ समबडी इज वेरी मच स्टबन काइंड ऑफ इट, उसके लिए पहले ही कुछ लेकर आ जाते हैं. ले लो भाई. So I said that उससे डर लगता है. तो गांधी जी is in a what, in a very civic manner he was in a stubborn person. Civic manner, stubborn person. सब उससे डरते थे इस कारण से. So I said that this is about the Sardar Vallabhbhai Patel, and then after that Mopla rebellion. Which rebellion I said that? And it is then done on the Malabar coast. Where it has been done? And then Kuan Ahmad Ji, and then Ali Musalia. कौन कौन थे? Mopla. And then who is there? Kuan Ahmad Ji. कह दो. एनर्जी डाउन हो जाता है जल्दी. चेहरे पे स्माइल रखो तो मेरी एनर्जी मिलती जाएगी. Yes. तुरंत हम लोग भूल जाते हैं. सोल फोर्स सुनते समय कितना अच्छा लगता है. आई विल यूटिलाइज सोल फोर्स, एंड नेक्स्ट मोमेंट ही फॉरगेट. जब मैं बोलता हूँ ना तो आपको दिमाग नहीं आई विल डू दैट, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फॉरगेट. एंड सोल फोर्स क्या होता है? इट इज एन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी गिव्स यू हैप्पीनेस. यस. तो चेहरे पे क्या होना चाहिए? नहीं तो इंटरव्यू के दिन जाके जबरदस्ती हंसना. क्यों? एक नेचुरल होता है और एक वक्त फेक होता है ना. जबरदस्ती उस दिन अंदर से डर भी लगता रहेगा, एंड ऑल पानी भी पीते रहोगे. सो आई सेड दैट देयर इज एन कुआं अहमद जी एंड अली मुसलियार मोपला. हमने क्या किया? कुआं में किसको डाल दिया? किसको डाल दिया? अहमद को डाल दिया. और अहमद को डाल दिया, वो वहां से पहुंच गया हज करने. कहां पहुंच गया? अहमद को डाल दिया. किसको डाला? कुएं में किसको डाला मैंने? अहमद को. फिर वहां से वो किधर के लिए गया? शॉर्टकट रास्ता. केरला पीपल्स आर गोइंग सो मेनी इन द व्हाट इज एन अरेबिया रीजन एंड ऑल. सो पुटिंग इनटू द कुआं, एंड अहमद जी इज फ्रॉम द Kuamis well. Okay, you are thinking what I am talking about. Kuamis well, where the water that you can, and in this well that I put the Ahmad ji, and from there he went to the what? Saudi Arabia. That is in a Hajj. Hajj पहुंच गया. कहाँ पहुंच गया? Yes. और सारे मुसलमान, सारे अली और मुसलमान यहीं से निकलते हैं. कैसे निकलते हैं? कुएं में घुसे, एंड देन और वहां पे बड़े बड़े कुएं भी आपको पता है ना, पेट्रोल के कुएं. सो मेनी वेल्स आर देयर. सो हमने क्या बोला? मापिला, और या आई सेड दैट मोपिला को हमने कहाँ डाल दिया? हमने
सो डालने का एक प्रोसेस है. You don't enter through the body this side. आपको you have to enter through the मुंह के साइड से. किसके साइड से एंट्री करना है? मुंह के साइड से. मोपिला. I said that मोपिला. मुंह के साइड से एंट्री and then कुएं में and then Namaji has reached Hajj. And at the back of it, all Musalman, Ali and all Musalman entered and did Hajj. Ali, Musalman. So let us see. आपके पिक्चर बनेगा तो याद रहेगा. वहां पे कौन नहीं तो बसते रहेगा सर ने दिगंबर विश्वास इसमें था. ये मोपिला में कौन था पूछते बच्चों को. why the people are getting ये कौन है हिस्ट्री. why the history become very tough. the reason behind facts. so many names. आपके 10 फ्रेंड्स का नाम याद करना मुश्किल होता है. नहीं आप तो list of names. and I said that Mopilas are the which Muslim peasants, and there is an Hindus are the lords. Who are the Jamindars? Who were Jamindars? Mapilas were the Muslim tenants inhabiting the Malabar region, where the most of the landlords are what? Hindus, and expressed their resentment against the oppression of the landlords during the 19th century also. So they are not only talking about in the in the 1921, but they are talking about earlier. And perhaps you know that in 1921 there is the non-cooperation movement and Khilafat movement is also going on. Yes or not? Non-cooperation movement and Khilafat movement has been it goes till 1920. 1920 से लेकर 1922. Understood? And that time it is also what यहाँ पे कौन support करने के लिए आ जाएगा? Khilafat movement. And if the Khilafats are coming, Khilafat it is Muhammad Ali, Shaukat Ali. If they are doing, it means Gandhiji will also, Congress will also come in the support of it. So I said that Mapilas are the Muslim tenants and inhabiting the Malabar region, where most of the landlords were Hindus, and Mapilas had expressed their resentment against the oppression of the landlords, even in the 19th century. Their grievances centered around lack of security of tenure. Generally farmers को क्या है, कब मेरा tenure खत्म हो जाएगा, and the farmers will get high rent. यही सारी जगह problem था. And then renewal fees. कभी भी fees renew किया जा रहा है बीच में, चलो भाई आपको इतना इस बार देना है. High rent तो है ही, that is fixed कि next year this much rent, next year this much rent, and then यहाँ पर 10 साल के बाद ये rent, and then they are saying some kind of rent, but in between they are saying some kind of what, renewal of the fees and other oppressive practices. ये तो एक simple है. आप किसी farmer से जाके पूछोगे क्या क्या problem है, they will give you the list of problems. Yes. And that is known as the other oppressions that is done by this. So I said that who is there? Mapilas are what? Muslim peasants, and they are what is oppressed by whom? Hindu landlords in Malabar coast. And then I said that the Mapila tenants were particularly encouraged by the demand of the local Congress body for the government legislation regulating tenant-lord relation. I said that Mapila tenants are particularly what they encouraged by the demand of the local Congress body. उन्होंने increase किया for a government legislation. There should be a government legislation regulating tenant-landlord relation, maintaining what is it? यही तो चाहिए, tenancy act, tenant-landlord relation. So Congress encouraged Mapilas to make pressurize the government to make tenant-landlord relations act on it, regulating this one. Soon the Mapila movement merged with the ongoing Khilafat agitation. Congress ने ऐसे बात की, and then it became the part of what? Khilafat movements also. And then ध्यान से देखेंगे. In between Khilafat, most of the Khilafat and non-cooperation revolutionary has been put behind the jail. And now there was no one to support Mapilas. And then Mapilas were what is nowhere. Then the leaders come. क्या नाम है इनके leaders? So they were what is handled by whom? Congress leaders. They were handled by whom? What is Khilafat leaders. And then now they are not being what is supported by him. अब उनको support नहीं मिल रहा है. Then their portion comes itself, और वो लोग उल्टा सीधा ले लेंगे. I said that non-cooperation, the leaders of Khilafat, non-cooperation movement like Gandhi, Shaukat Ali, Maulana Azad addressed the Mapila meetings. After the arrest of national leader, the leadership passed into the hand of local Mapila leaders. अब इनके हाथ में आ गया, and they can make mistake. And then I said that things took a turn
for the wars in August 1921. When the arrest of respected priest leader, priest leader Ali Musaliar, arrest of an award, उनके respected leaders थे, and then priests थे, कौन थे? Ali Musaliar, उनको arrest कर लिया गया, and then sparked of a large scale riots, initially the symbol of British authority and everything, buildings, authority, symbols, सभी चीज को, banks, that courts, police thanas, everything they tried to, what is an attacking? This is Mapidas. And I said that, and even then the landlords and all, but once the British declared martial law, repression began in earnest. Then the character rebellion underwent definite change. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अब suppressed हुआ. Many Hindus were seen by the Mapilas to be what helping the authorities. अब ये Mapilas आपस में क्या बात कर रहे हैं? What they are talking? These British were supported by the what? Landlords, Hindus. यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है. And I said that what began an anti-government and anti-government पहले वो कानून के लिए बनाने के लिए तो बोल ही रहे थे. Yes or not? And who will arrest? Government has arrest. So they were anti-government, but they become anti-landlord. Why? They found that the Britishers are being supported by, they are talking to the what? Landlords. Therefore, landlord must be supporting. Therefore, they become also anti-landlord. And then the communalization of the rebellion